The Bhubaneswar Government Railway Police have arrested a notorious mobile snatcher using advanced face scan technology at the city's railway station. The accused, identified as Amit Kumar Barik, was intercepted on Monday after the digital system matched his face with existing criminal records. Acting immediately on the face recognition alert, the GRP team surrounded Amit near the station premises and detained him without resistance. Police recovered more than 4 stolen mobile phones from his possession during the search. Investigations have revealed that Amit is a habitual offender involved in several mobile snatching incidents across Bhubaneswar and neighbouring districts. Multiple cases are already registered against him under the Commissionerate Police, and more links are now being probed. The arrest shows how facial recognition tools are transforming on-ground policing, especially at busy hubs like railway stations. Officers say the technology will help identify repeat offenders swiftly and significantly boost public safety. स्टेशन ने आरपीएफ और जीआरपी पेट्रोलिंग थिला मिलित पेट्रोलिंग रे मैं गोटे लोक से लिफ्ट रे उठुला ऊपर को उठुला ताको तार एक्टिविटीज टिके सस्पिशियस थिला ताको हमें ट्रेस करलु ताको पचारलु से प्रथमे मानिला नहीं देन हमें तार ना कहला से अमित बारिक बोली तार ना कहला फेस स्कैनर तार यूज कर तार सो प्रकृत से केस रे इन्वॉल्व अच्छी आम देखिए फेस स्कैनर हूँ मल्टी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से आम मोबाइल लोड अच्छी आम तार फोटो उठेले तार फोटो रे बाहर से प्रकृत जब पूर्व प्रीवियस क्रिमिनल इंसिडेंट बा क्राइम करथिबो तारा विरुद्ध रे जते केस थिबो बाहर सर ये कोन अभ्यासगत अपराधी कर गोटे फोटो रखाई कि ताको सिस्टम रे अपलोड करा जाय नै सेटा फेस हमर एबे जो आगुरु हमर फिंगरप्रिंट थिला फुटप्रिंट थिला एबे फेस स्कैनर भी ऐड करा जाय छै सेथरे हमको सुविधा होछि हमें तो जण को आनिले फेस स्कैनर रे तार फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट नबा को लेट हो तो हमको स्पॉट रे हमें ये कर दे।